afternoon, this is Meera, and today I'm in my office and I'm going to give you lecture on some basics IELTS speaking questions. Actually, in our IELTS speaking exam, some questions are like that they ask you 99 to 100%. यानी कि आपका जो IELTS के स्पीकिंग का एग्जाम है वो शुरू ही इन क्वेश्चन से होता है और बहुत सारे स्टूडेंट ड्यू टू मेनी रीजन समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो और कभी कभी उन्हें पता ही नहीं होता है कि आंसर की बिगिनिंग कैसे करनी है। तो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू 5 IELTS स्पीकिंग क्वेश्चंस। वो 5 क्वेश्चन से 99 to 100% आपकी IELTS की स्पीकिंग का एग्जाम शुरू होता है और मैं आपको सिखाऊंगी उनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ आई कुड से कंफ्यूजन। तो डरने की जरूरत नहीं है, मेरे क्वेश्चंस के आंसर सुनिए, अपने आंसर्स दीजिए और फिर नया आंसर बनाइए। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स देयर फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स जहां से आपका एग्जाम शुरू होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स योर नेम। तो बिगिनिंग कैसे करेंगे? बहुत अच्छा, वेल वेल मैम, वेल सर, वेल मैम माई नेम इज, माई फुल नेम इज लेट इट बी भूमि चौधरी। माई फुल नेम इज साहिल जानी। Sahil is my first name and Jani is my family name. Bhumi is my first name and Chaudhary is my surname or family name. तो आंसर बन गया आराम से। My full name is Bhumi Chaudhary. Bhumi is my first name and Chaudhary is my surname. Finish. Now, 99.9% they'll ask you again other question. Second question. How should I call you? और हाउ कैन आई कॉल यू, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने पूछा है इफ दे आस्क यू हाउ कैन आई कॉल यू, तो आप शुरुआत कीजिए यू कैन कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम भूमि ओनली, यू कैन कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम साहिल ओनली, यू कैन कॉल मी बाय माय सरनेम चौधरी और यू कैन कॉल मी बाय माय सरनेम जानी। यानी आप क्या चाहते हो कि आपको वो किस नाम से बुलाए। अगर पेट नेम से बुलवाना चाहते हो तो पेट नेम बोल दीजिए, ओके। और शुड से शुरू हुआ क्वेश्चन, यू शुड कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम भूमि और यू शुड कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम साहिल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हम आराम से पूरा करते हैं, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 100% दे आस्क यू Can I have your ID please? तो वहां वो आपसे आईडी कार्ड पूछेंगे, मीन्स आईडी आपका मांगा जाएगा, आइडेंटिफिकेशन। तो आईडी के तौर पर आपको वहां पे अपना पासपोर्ट दिखाना है। आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाओगे वहां पे, तो आप आंसर कैसे दोगे? यस श्योर मैम, हियर्स माय पासपोर्ट। यस श्योर मैम, दिस इज माय पासपोर्ट। सो मीन्स वो आपका पासपोर्ट देखेंगे और देख के वापिस कर देंगे। So these are 3 questions. Now my fourth question. 99.9% they ask you, tell me something about yourself. अब जब yourself यानी आपके बारे में आपसे पूछा जाता है तो ऑफ कोर्स अपना नाम आप पहले बोल चुके, तो एज बोलना चाहते हो तो बोल दीजिए। तो yourself के लिए आप क्या बताओगे उसको? अपनी एज बोलना है तो बोलिए। योर गोल्स, आपके लाइफ के गोल्स बताओगे, आपकी हैबिट्स बता सकते हो, आपकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स बता सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आप अपने बारे में उन्हें बता सकते हैं। चलिए मैं एक डेमो देती हूँ। ओके, उसने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, गिव ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ। ब्रीफ में अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें। सो एक्चुअली मैम, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। एक्चुअली मैम, as I said to you before, I Bhumi Chaudhary, let it be 18 years old, जितनी भी आपकी एज है, I Bhumi Chaudhary, 18 years old, want to fly abroad for my further study. Actually, my goal is
to get international degree in my Masters of Science, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप जाना चाहते हो. सो फिर से, I, Bhumi Chaudhary, 18 years old, want to fly abroad for my Masters of Science. Actually, I want to get international degree. In my life, I have two goals. My short-term goal is, as I said to you before, my short-term goal is to get international degree, and my long-term goal is to be a scientist. जो भी आप बनना चाहते हो, business lady, businessman, want to get job in multinational company, और जैसे भूमि ने बोला, I want to be scientist. So this is my long-term goal, and want to serve my country, want to serve humanity. And ma'am, if I talk about my hobbies, तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हो. If I talk about my hobbies, then like everybody, I have some hobbies. My hobbies are watching television and reading books, but my favorite hobby is reading books. Now one more thing, जब आप रीडिंग बुक्स बोल रहे हो तो सोच के बोलिएगा. अगर आपको बुक्स पढ़ना नहीं पसंद है तो आप फंस भी सकते हो, क्योंकि उसका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद बुक्स के ऊपर आ जाएगा. व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स डू यू रीड? हु इज योर फेवरेट ऑथर? राइट, व्हेन डिड यू रीड दिस बुक? सो फिर भी अगर आपने रीडिंग बुक्स बोल दिया है तो हम अब पीछे नहीं जा सकते. तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको किस तरह से उसे वहां पे मैनेज करना है. मैंने बोल दिया, मैम, माय फेवरेट हॉबी इज रीडिंग बुक्स. एक्चुअली आई लव टू रीड. मैं उसको चांस ही नहीं देने वाली कि वो पूछे व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स. आई लव टू रीड माइथोलॉजिकल बुक्स. बहुत इजी है. माइथोलॉजिकल मीन्स धार्मिक किताबें. वेरी इजी, बिकॉज बाय रीडिंग माइथोलॉजिकल बुक्स आई गेट पॉजिटिव वाइब्स. तो उसके इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया कि व्हाई डू यू रीड माइथोलॉजिकल बुक्स. So I love to read mythological books like Ramayana, Quran, Bible, Gita. I love to read those, ma'am, because after reading those, I become optimistic. I become positive. So I can do every work positively. And talking about my habits, actually, like everybody, I too have some bad habits and some good habits. But luckily, I have only one bad habit. And that habit is just go to my bed very late night. And my good habits, yes, my good habits are getting up early in the morning, pray to God, do exercise, and then start my day. Fine. And I love to just get the blessings of my parents before starting my day. This is also my good habit. And one of my good habits is to help everybody. This is my nature also. So ma'am, this is brief description of myself. So in this manner आप अपने बारे में पूरा कर सकते हैं. Now my last question, my fifth question. 99% वो लोग आपसे पूछने वाले हैं. Tell me something about your family. अब आप जॉइंट फैमिली बोलना चाहते हो, न्यूक्लियर फैमिली बोलना चाहते हो, कुछ भी. मान लो मैंने जॉइंट फैमिली बोला, तो जॉइंट फैमिली जिसमें आपके अंकल, आंटी, ग्रैंड पेरेंट्स सब इकट्ठे रहते हैं, तो उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं. न्यूक्लियर फैमिली जिसमें पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. तो चलिए पहले जॉइंट फैमिली का आंसर देते हैं. वेल मैम, वेल बार बार नहीं बोलना, या ऑफ कोर्स मैम. पहले मैंने एक्चुअली से शुरू किया, वेल से शुरू किया, अब ऑफ कोर्स. या श्योर मैम, एक्चुअली आई लिव इन जॉइंट फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स. अब 8 मेंबर्स बोलिए तो 8 काउंट करके बोलिएगा. हाँ, 6 बोल दोगे तो नहीं चलेगा. I live in joint family of 8 members. My grandparents, my own parents, and I, my younger brother, and my uncle and auntie. So my grandparents means my grandfather and my father and my uncle. They have their family business. And my grandmother, my mama, and my auntie, they all ages are housewives,
and I and my younger brother, we both are students. So in this manner, you can talk about your family. Actually, we are very happy and healthy family, enjoy our life under one roof. So I can proudly say that our family is the best family. So in this manner, you can finish your family description also. So in this manner, I can say that please prepare these 5 questions. If you have any query, then write me down in the comment box में लिखिएगा. ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस तरह से मैं अपने IELTS स्पीकिंग एग्जाम के सीरीज पे अब शुरू कर रही हूँ. ठीक है, तो इस तरह से मेरे नेक्स्ट IELTS स्पीकिंग के वीडियोस के अंदर आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और मिलेंगे अलग से टॉपिक के ऊपर. Till then, bye bye, take care, enjoy your day.